Who's they going to pull next? The prodigal son turned Messiah gets his second 100 in successive. India have won in dramatic style. The whole of Bengal are on their feet. Diego! Not that important. He's gone the next ball. The dream has diminished for Carlos Brathwaite. Unbelievable scenes here at the Budwig. आज के एपिसोड में हम लोग स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स करने वाले हैं और ये सुन के जो ट्रिगर वार्निंग में वो जो लोग हैं जो ये सोच के एपिसोड स्विच ऑफ करने वाले हैं कि या तो ये सोच के कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए या फिर ये सोच के कि स्पोर्ट्स में उनको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि द रीजन वी स्टार्टेड पीसीसीआई पॉडकास्ट वाज दिस, राइट? बिकॉज सम पीपल वर लाइक हमको क्रिकेट के बारे में सुनने का ही नहीं है, तुमको पॉलिटिक्स बोलने का है तो बोलो और क्रिकेट का अलग से करो। तो हम लोगों ने अलग से शुरू किया था, बट ये एपिसोड में वी आर गोइंग टू रिव्यू दिस बुक which is called War Minus the Shooting by Mike Marquesee. And Mike Marquesee. This book is a travelogue of his travels through India, Pakistan and Sri Lanka in the 1996 during the 1996 World Cup. And while the book covers cricket तो बस बहाना है, cricket politics को बाहर दिखाना है। And honestly, if you like reading books, you don't even have to be a cricket fan to enjoy this. It is it actually taught me so much about just like regular stuff which I never would have come across. Just like marketing कैसे करते हैं लोग. Even that, like a few chapters, इसमें वो पेप्सी के एक marketing जो इंडिया का marketing head था उसके साथ भी एक interview है which I liked. And a lot of other things. जो हर बात पे nothing official about it बोलता रहता है। हाँ, exactly. यही है right choice. यही है right choice. यही है right choice. So, और things like that, same thing, मतलब, and not just in India, the same thing that they did in Pakistan as well. Everywhere that VIP का, मतलब like VIP culture. कुछ चीजें जो मुझे ना मैं भूल गया था। So पहली चीज तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं like my first memory जिसे कहते हैं बच्चे की जो पहली मेमोरीज है, तो शायद आई थिंक मेरी फर्स्ट प्रॉपर मेमोरी ऑनेस्टली बोलूंगा तो आई थिंक इट इज द 1994 में जब वेस्ट इंडीज इंडिया आया था टूर करने और मोहाली में टेस्ट मैच हुआ था जिसमें मनोज प्रभाकर की नाक टूट गई थी। वो मेरी पहली मेमोरी है क्रिकेट की। वहां से मैं मतलब नाक टूटी थी और इस वर्ल्ड कप में नाक कट गई थी। वहां से मैंने शुरू किया था। पर 1996 वर्ल्ड कप ऐसा था जहाँ पे मतलब फुल एक्साइटमेंट के साथ मैंने कि वो जो याद है कोक के साथ आपको वो मिलता था कि आप बुक फ्लिप करो तो सचिन का शॉट कंप्लीट होता था। ये सब चीजें ये तो फुल एक्साइटमेंट के साथ देखा था। इनफैक्ट मुझे ये भी याद पहला मैच था न्यूजीलैंड इंग्लैंड का। वर्ल्ड कप शुरू हुआ न्यूजीलैंड इंग्लैंड के मैच से। मतलब अहमदाबाद में डे गेम इतना बोरिंग। एसल ने अच्छी बैटिंग की बट लाइक पूरा विजुअल और ये सब इतना, क्योंकि उस वर्ल्ड कप के पहले क्या हो रहा था कि जो चैनल वैनल में ना वो रिकैप जैसे होता है ना कि 83 में हम जीते ये वो, उसमें 92 दिखा था। 92 समहाउ बहुत ज्यादा कलरफुल और बहुत ज्यादा कुछ एक स्टाइलिश लगता था। और तो पहले तो ये एक्साइटमेंट था कि यूनिफॉर्म कैसी होगी, बच्चों के लिए तो ये सब रहता है, राइट? तो फिर 96 वर्ल्ड कप शुरू हुआ और पता नहीं बहुत ही डल लगा मुझे अहमदाबाद का मैच, पहला मैच। बट देन There's never a dull moment in Ahmedabad, let me tell you. नहीं सॉरी, आज मिक्स कर सकते हैं। तो लेकिन उसके बाद anyway when I was reading this book, so for example one thing is the 1996 quarter final, right? और मैं अब before picking this book मेरे दिमाग में ये था, मुझे ये पता है कि वसीम अकरम ने वो मैच के पहले पुल आउट कर लिया था। But I honestly believe that there was no serious injury to Wasim Akram. It was just that he pulled out for whatever reason. And people used to say many things about him pulling out in Pakistan especially. कि पैसे मिले हैं जो भी ये वो। Amar was right, man. मतलब हम पाकिस्तान एक्चुअली फ्यूचर में था और हम लोग अभी वहां पहुंच गए हैं। अभी जैसे हर चीज में अपने अभी यही होता है, वो क्या ऑलरेडी हो रहा था 90। And that brings you back to why this book is good, right? मतलब it is essentially what it is like an archive, a snapshot of what India was in 96. It refreshed my memory. And the thing is, it's so easy to kind of forget things. Like मैं अकरम को blame करता, अब मुझे realize हो रहा है कि साउथ अफ्रीका के साथ उनका उससे पहले आखिरी लीग मैच था and it was he was seriously injured and that is why he did not play.
Yeah, he wasn't able to ball properly there. Matlab, he balled through the injury in that match, and that's why. Yeah. और वो मैच भी हार गए थे वो लोग. हाँ, वो मैच भी हार गए थे. पर तो हम श्रोताओं को बुक की तरफ ले जाते हैं पहले, हाँ. और फिर देन वील गो टू द टूर्नामेंट अगेन, राइट. तो जो ऑथर हैं इस बुक के, वो तो लेफ्टिस्ट हैं, ये तो क्लियरली समझ में आता है. कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट है एकदम, हाँ, हार्डकोर. मतलब एकदम hardcore. एकदम. वो इंडिया के रुके भी लेफ्टिस्ट और फेलो कम्युनिस्ट कॉमरेड्स के घर ही थे. So basically, the premise of this book is that there is this America-born British है या American, I don't know how we would define him. I think he's American born British Brit- person, I guess. Because he was a Yankee fan as well. He moved to UK like when he was 17 or something like that, and then he covered this tournament for The Guardian or किसकी तरफ से किया था ये? I think he was writing articles for The Guardian at that point, and I think the book starts with how India gets the 96 World Cup, right? Which is again fascinating because contrasted to where we are now, where there is no notion of, say, South Asian solidarity or any of that. I think this whole book starts with how this meeting in the MCC long room happens, and then there is snooty comments about कि इन लोगों से नहीं हो पाएगा, एशिया में नहीं हो पाएगा, मतलब एशिया में नहीं करना क्योंकि वहाँ पे क्राउड बहुत मिसबिहेव करेगा, blah blah blah. And the irony of all of that is that 87 में एक वर्ल्ड कप हो गया है एशिया में. मतलब it's not that the tournament hasn't been hosted it before, but I think the stakes are a lot higher now by 96, right? There is a lot more money involved. So when because India won, 92 Pakistan won, so obviously it's going to be more. lot more money. अभी consumerism आ गया है, like markets have opened up and stuff, so पैसा तो है ही, but what strikes you is that जब आज के context में देखो तो मतलब the basic point is that किसी के पास भी power हो तो लोग कैसे react करते हैं, right? तो at that point BCCI wasn't this all powerful institution. तो मैं माइक मार्केसी के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ कि and this is to the fact कि कोई कहते हैं स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स में मत मिक्स करो या so it's a complicated argument, right? But here's the thing: everyone is political. Even not being political is political, and therefore this book is very interesting because it is someone who's quote unquote a socialist looking at cricket and the capitalism around cricket and how it is kind of changing cricket. And it's just picking up at that point. क्योंकि अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू आप अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू अगर ला ही नहीं पा रहे हो किसी चीज में, तो फिर आप स्कोर्स ही बता रहे हो ना, फिर तो आप ये बोलो कि सचिन ने कवर ड्राइव मारा और चौका गया. नहीं, मैं इसका एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ जो इस बुक में है. तो देयर वाज दिस, सो ये पिलकॉम थी ना, ये कमिटी जो जिसने अरेंज किया था. तो इस डालमिया वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड देन देयर वर टू पीपल, वन फ्रॉम पाकिस्तान, वन फ्रॉम श्रीलंका. पाकिस्तान इंडिया लंका कम्युनिटी वाज पिलकॉम. हाँ. तो तो इसका ये जो मार्क मार्क्वेसी का मतलब जो ये जिस द प्रिज्म थ्रू व्हिच ही इज लुकिंग एट इज, सो ही गिव्स एन एग्जांपल वेयर मोहम्मद अजहरुद्दीन के ट्राउजर पे किसी सीमेंट कंपनी या किसी का एड है, एंड पिलकॉम सेज कि वो कोट स्पोर्टिंग इक्विपमेंट वाली कंपनी नहीं है, तो तुम उसका ऐड नहीं कर सकते बिकॉज फॉर वॉट एवर, लाइक दे गिव ऑल द BS रीजंस, लाइक यू नो, मतलब इट इज नॉट रिलेटेड. एंड देन ही सेज Wills. Despite ignoring the fact that the World Cup was sponsored by Wills, which is a cigarette company, and people were having Foursquare, which is another cigarette company. They were advertising them on the bats and everything. अच्छा, मैं मतलब we'll come to the consumerism of this. मेरे को एक और चीज़ पिलकॉम से ये चमका कि say the tournament starts off, just even before it starts off, you have all the LTT issue going on, and then Australia not wanting to tour and all that happens, right? And the way this bid was won was that a lot of the associates and the smaller nations voted for the Pilcom bid as opposed to the English bid, right, for the World Cup. So, and then the English Cricket Board says that ये लोगों ने तो पैसा दिया है ज़्यादा. The point was that the bid came with more participation fee to the smaller nations, which is why they voted for the Pilcom bid. This is how it begins, and then you have when Australia opts out, wants to opt out of playing in Sri Lanka, and the organizing committee is told that you can move that game out to Madras or anywhere in India, and they would play. Instead of actually choosing to do that, they say कि
नहीं टोर करना नहीं, है तो हाँ, फोरफिट करो. एंड 4 फीट करो, हाँ. और इस पे एक प्रेस And कॉन्फ्रेंस they होता है ना send बाकायदा. हाँ, and they send a combined India and Pakistan team टीम to play in Sri Lanka. श्रीलंका. Yeah. So and I'm not even like going into the merits of that boycott. Probably they felt not very secure at that point touring, but the entire symbolism of it would not be possible today, right? Matlab, that's the Oh yeah. first thing that strikes you. Matlab, India of then versus now. And even after that, India of then has enough symbols और signs की क्या होने वाला है या हाँ, क्या हाँ, हो हाँ, रहा है वही जो मैं बोल रहा मतलब था कि जैसे तुम लोगों ने बोला ना कि it is a snapshot of that time, which is true, but it is also very prophetic in that, so like it says some things which are just absolutely in turned in out to be in true. one part of the book, in one chapter of the book, Mike is talking about the India Sri Lanka game, the India Sri Lanka League game that happened in Delhi, and he talks about, first of all, he talks about the awful conditions at the Arun Jaitley Stadium, but more importantly, he talks about these people who are watching the game, and after a point they get bored and they start randomly shouting Pakistan Murdabad. Pakistan, हम बोलता हाँ, Pakistan हाँ, not even गेम चल playing, रहा हाँ, है इंडिया Pakistan high श्रीलंका का. high, हाँ, Pakistan high पाकिस्तान high, हाय हाय. हाँ, हाँ. And this is so telling of like the general psyche of us. एक तो ये दूसरी चीज जो मैं ये बोलने वाला था कि माइक मार्केसी की बात कर रहे हैं तो उसमें ये बोला था कि he has written, so he was born in America, lived in the UK from the 1970s. So he saw the whole like how English cricket has dominated the world cricket, not in terms of sports but in terms of इसका finances, right? लाइक तो मैं बस इतना बोल रहा था कि इसने मतलब सो ऑब्वियसली ये जहां जहां गया है वहां की तो पोल खोली है इसमें, एंड एवरी नाउ एंड देन इंग्लैंड को भी लताड़ दो, अभी 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 मौका मिला तो है, हट सारे. उसमें मेरा favorite line is that when he's trying to chalk out an itinerary of which games he wants to watch, he says, I Yeah. want to go watch a couple of games featuring the associates. I want to watch India play Pakistan. I wanted to watch a game in Bombay, in Chennai, and in हाँ. Calcutta. ये सब बोल के एंड में बोलता है, and I wanted to avoid the English at all costs. Yes. मतलब इट्स रैंडम, कुछ भी चल रहा है, मतलब वो कीनिया वेस्ट इंडीज में कीनिया की तारीफ कर रहा है, एंड बीच में मीनवाइल इंग्लैंड वाज जस्ट प्लेइंग सम यही बोरिंग मैं गेम्स. यही बात कह रहा था कि और दिस गाय हैज रिटन अ बुक कॉल्ड एनीवन बट इंग्लैंड, Yes. where he's talking about how he would rather want any other team to win or any other nation to like win at cricket than England. And all through this book, he is a journalist being paid by an English newspaper company to cover a World Cup, and he's clearly saying that he would do anything but watch England play or have England win. And Right? accredited by the English board to go and हाँ. watch it. Yes. हाँ. और उसके अब now think about India of today. Can a journalist, so can anyone in India write anyone but India? Like I know in this book Ramchand Guha Ramchand Ghosh said he says will, but after, that was a reaction to how people were which booing like Javed we Miandar. feel this way, right? We have felt this way that it's just vulgar sometimes the way Yeah. especially the Indian cricket, everything around Indian cricket is. No, Be so it just to media, be it the fans. just to tell the listeners about that thing. So this happens when India beats Pakistan in the quarterfinal. So And we'll just get to that. So the thing is that this book has okay. this constant thread, which is about this simmering tension about whether there will be an India-Pakistan game or not, and then it looks at it from different perspectives. So he goes to Pakistan first, speaks to a few people. Some of them say that I think Mike is of the opinion that होना चाहिए match, एक match. So, but then the people who are hosting him in Delhi, the family that is hosting him, they say that पागल है क्या, मतलब why do you want an India Pakistan game at this point? There are no winners at the end of it, मतलब. So हाँ, मतलब if India wins तो India के Muslims की scrutiny हो जाती है, if Pakistan wins Hindus in Pakistan suffer the brunt, तो यही होता रहता है. यही होता रहता है, and then there is nothing that will good that will come out of it. So better not to have an India Pakistan game at all, and some other country should win the tournament, and preferably not India or Pakistan. This is one of and then right through this, then there are these conflicting opinions. This is 1996, and the guy who's the Pakistani representative of Pilcom, जिससे ये बात करता है, वो बुक में एक बार बोलता है ना कि इंडिया पाकिस्तान गेम में जीते कोई भी, अल्टीमेटली हारता इंडियन मुस्लिम ही है. Indian Muslim. And that is such a telling statement.
and which is and and true. and Even it is becoming yeah, even more true yeah, yeah, as days go by. Like, we are talking about this book, but I mean, this दिल्ली एंड हरिद्वार में ये असेंबली होती है जहाँ पे एक हाँ, हिंदू सभा जो भी Hmm. लहसुन होता है, where they are talking about these things, and I mean, at the end, basically, जितनी भी गाली दे दो, माइक मार्केसी जितनी भी गाली दे दो इंग्लैंड को, आई इंग्लैंड, और जितना भी कुछ हो जाए, इंग्लैंड इज स्टिल मच मच बेटर. oh yeah, yeah, and अरे Look, that is we are just shit. मतलब the bar is completely different like मतलब comparison ही नहीं है कोई. मतलब obviously you'll find hundreds of things to criticize there, but जिस level पे यहाँ पे होना चाहिए, that is just like, I mean, completely different. So So हाँ, so at that point, so I think ये बॉम्बे वाले चैप्टर में है ना, where बॉम्बे वर्सेस मुंबई वाले चैप्टर में where he watches the India Australia game. I think that is where उसके बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा मैं. तो ये जैसे मैं शुरू में बोल रहा था ना कि जैसे वसीम अकरम वाली स्टोरी की, मैंने सोचा ही नहीं. अभी सोचूं ये बुक पढ़ने के बाद तो समझ में आता है कि भाई वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, और बॉम्बे को एक भी नॉकआउट गेम नहीं मिला है, नहीं मिला, वानखेड़े को and एक भी नॉकआउट गेम. दिस इज हाँ, इम्पॉसिबल. और रीजन वाज कि पाकिस्तान अगर आ जाए द तो क्या रीजन होगा. वाज द रीजन वाज पाकिस्तान, और इसीलिए उनको एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का लीग गेम मिला. बाला इमेजिन, साहब वर्सेस उद्धव साहब. इमेजिन, लाइक ये सब चीजें, मतलब बहुत छोटे थे अपन तब तो, और बट ये सब तभी तो पॉलिटिक्स ये तो सब, समझ ही में नहीं आया था. नहीं और समझ उसके आया ऊपर था, ये तभी लिखता है ना नहीं वो, समझ when he says that बाल ठाकरे के बारे में, that he invented his own version of the debit test, declaring that he wanted to see Indian Muslims with tears in their eyes whenever India lost to Pakistan. Then he हाँ, he calls this predicated his ठाकरे test test. on the assumption of Indian defeat. That he predicated this test on the assumption of an Indian defeat spoke volumes about the resentment and impotence he was trying to exploit. ये particular sentence ना, मतलब it hit home. Yes, मतलब ठाकरे जी बाल को किसी साहब और ने ने अज्यूम रिप्लेस कर कर लिया लिया कि है, हारने लेकिन वाले हैं, मतलब हाँ हाँ बस. नहीं तो ये अजम्पशन बहुत वैसे बहुत वो नहीं है, यू नो, ठीक है, प्रैक्टिकल था. प्रैक्टिकल अजम्पशन था बाला साहब का. बट नहीं, इस बंदे ने मतलब माइक मार्किसी ने, he's basically he's gone to all three countries, exposed the shit out of their hypocrisies, even श्रीलंका के लिए भी. यार अरे मैं एक चीज बोलूं, इससे मुझे याद आया. तो ये वाला चैप्टर, जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं भाई, रिस्पेक्ट बढ़ गई एक आदमी के लिए, बाय द वे. जब पहली बार सनी जी, शिवसेना की सनी गवर्नमेंट जी, बनती है हाँ. महाराष्ट्र में, एंड सुनील गावस्कर इज द शेरिफ ऑफ मुंबई, व्हिच इज एन ऑनरेरी टाइटल, हाँ, and he goes up and he goes up to them and says कि I'll resign from the position because उसकी बनती नहीं इन लोगों से. yeah. तो सिर्फ इतने से भी मेरे लिए सनी जी की रिस्पेक्ट बढ़ गई. तो अरे अभी उस- अरे मान उसके मान बाद- करेगा, मैं सुन लेगा उसका मान. उसके बाद वो नहीं 92 में जब इमरान इनवाइट्स हिम हाँ, आफ्टर द हाँ. वर्ल्ड कप विन, जाता है वो वहां पे और पाकिस्तान. वो बोलता है, स्टेटमेंट देता है इंडिया जब हाँ. वर्ल्ड कप के बाहर होता है कि आई सपोर्ट पाकिस्तान. अभी सोच, ये सब हो सकता है, ये सब अभी सनी जी भी नहीं कर सकते. And then he writes something about the Bombay riots where there is a family that is being like targeted by Yeah, this yeah, Hindu yeah, yeah. Hindu right wing mob. फिर सनी जी वहां पे जाके फिर इंटरवीन करता नहीं, है. सनी जी की जो मैंने खुद की भी बायोग्राफी, तो मेरे लिए ये क्रिकेट बुक्स के हिसाब से बहुत अच्छा साल रहा पर्सनली. सो आई रेड, आई स्टार्टेड विथ मतलब द मदर ऑफ ऑल, CLR जेम्स वाली, which is Beyond a Boundary, which is quoted in all the other books that followed. वो तो वो है ना. In fact, War OG है. minus the shooting, CLR James quoted this, right? That sport is war minus the shooting. And so and then I read Sunny G's book, then I read Pandits from Pakistan. उसमें भी James को बहुत quote किया है और इस book में भी किया है. So हाँ, मैं बस ये बोल रहा था कि even in Sunny G's biography, if you just read through it, and that was written in the 70s, he wasn't even retired back then. Sunny Days जो book थी. And but it's pretty clear from that Sunny Ji was a pretty good person. मतलब just the way he's talking about other people playing with वो जो World 11 versus Asia, sorry, Australia versus Asia 11, whatever the rest of the world, right? जिसमें वो हनीफ मोहम्मद या किसके साथ like their teammates, and
they share a room and all those things. And then the way, especially he's I think he's enamored by the Caribbean over, like he thinks he is one of them actually. So और दूसरी चीज ये कि उसमें जब दिस चैप्टर राइट, बॉम्बे वर्सेस मुंबई बोल के एक चैप्टर राइट, और इस यही चैप्टर बेसिकली, और उसमें वो सलमान रश्दी को कोट करते हैं कि इट वाज नो लॉन्गर माय बॉम्बे। My जब वो Bombay. पढ़ा ना तो मैं ऐसा पूरे इंडिया के लिए ऐसे फील करने लगा कि हाँ भाई सही बोल रहा है तू। वो वहां पे, और सिटीज के बारे में जब डिस्क्राइब करता है वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। बॉम्बे के बारे में एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है, एंड एट द एंड ऑफ इट ही सेज रश्दी के बारे में वो, और ये 96 में बोल रहा है, एंड 96 इज जस्ट व्हेन बॉम्बे बिकम्स मुंबई एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंस, राइट? तो अबाउट दिल्ली ही सेज, और दिल्ली वाला पैराग्राफ से मेरे को लगा इट कुड वेल बी टुडे, राइट? सो दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स इट, yeah, विद द वर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनी मेजर इंडियन सिटी, जो शायद से थोड़ा सा बदला है उसके बाद, हाँ, मेट्रो मेट्रो के आने के बाद, a terrifying proliferation of private vehicles of all kinds, from gasping auto rickshaws to sleek imported rollers. It has become a city of throat-searing pollution and massive daily inconvenience. Okay, at the heart of political power and patronage, and of the vast North Indian plain, it is a magnet for the ambitious and the aspirant. ये सब बोल के then he goes towards, and these consumer goods buying, status seeking climbers also tend to be casually communal, that they are quick to assure yes, you that Muslims are pandered to by politicians and have no one to blame but themselves for their backwardness, and stridently nationalistic. These well heeled hooligans who sat behind us, chanted Pakistan Hi Hi with such relish, were typical. These are the people who vote for the BJP and who have made the capital city a stronghold of Hindutva. This is 96. 96 yeah, 96 And अगर मैं ये नहीं बताऊं तुमको कि ये 96 है, तो इट कुड वेल फिट हाँ, इनटू टुडेज इंडिया विथ yeah, नो yeah, मॉडिफिकेशंस एट ऑल, एक्सेप्ट फॉर कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुध रहा है दिल्ली का, दैट इज वो ऑल भी दैट कितना सुन चेंजेस। रहा है आई डोंट नो। और ये लास्ट सेंटेंस बहुत ही टेलिंग है, द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन मोस्ट इंटीग्रेटेड इनटू द ग्लोबल मार्केट प्लेस इज ऑल्सो द मोस्ट शॉविनिस्ट। ये हम हमेशा बोलते रहते हैं टेक ब्रोस के बारे में यहाँ पे, ये हाँ, yeah, सेंटेंस it's the same एग्जैक्टली फिट होता है उसके लिए। same thing. And in pretty much every chapter where he's describing, so he doesn't the good part is that cricket ka description is pretty good, but it's very small. So he basically starts with his own day, right? Before every match ki kahan pe tha, then how he actually got into the stadium. He talked to some stadium administrators, तो उनकी क्या मतलब उनका क्या सोचना था वगैरह वगैरह। And everywhere there's a common theme. You will basically see कि you know the most comical thing and the one of the best sentences in the book जो था वो ये था ना कि so ये वो बता रहा है जब दिल्ली पहुंचे, like he was seeing the Kotla match with the kids of the people he was living with, right? हाँ, तो when we finally reached our gate, police body searched some while letting others wander in freely. Large number of non-ticket holders gained admission. As so often in India, security managed to be heavy-handed yet ineffectual. और इसमें इसमें वो एक लेयर और डीप भी जा रहा है, because then he says the lower ranking officers who are given these duties are badly paid and poorly instructed and always under pressure from above to favor some and incommode others. तो मतलब वो इसमें ये भी देख रहा है कि भाई वो हो रहा है ऐसा, लेकिन जो हवलदार खड़े होके वो कर रहा है उसके पास उसकी उतना गलती नहीं प्रिविलेज है। नहीं है उसके हाँ, पास। उसके बाद मतलब he is even able to see this. And in other chapters he's also said कि एक तो किसी भी स्टेडियम में there were no, so especially about Kotla as well, it was being renovated for the World Cup, but कुछ भी एक मतलब there were court cases pending कि भाई ये safe नहीं है, तुमने norms follow नहीं किए, rules follow नहीं किए, लेकिन फिर भी घुसा दो। फिर हर जगह even in Bangalore, बैंगलोर वाले चैप्टर में ही राइट्स की सिक्योरिटी चेक कर रही है कि कोई बम पटाके कुछ नहीं जाएंगे अंदर, and the moment India starts winning suddenly they appear and From nowhere they appear. पता नहीं कहीं से तो एकदम बम फूटने लग गए ताकि मतलब ये चल क्या रहा है, like what exactly is going on. And the commonest theme across both India and Pakistan was like पब्लिक के लिए इतना डिफिकल्ट कर दो क्रिकेट देखना जनरल पब्लिक के लिए कि एक तो तुम 25,000 की कैपेसिटी में सिर्फ 5,000 जनरल पब्लिक के लिए अलग रखो, बाकी सब अपना और वो भी टिकट कहाँ मिल रहा है किसी को पता नहीं। हाँ, वो किसी टाइम को पता नहीं है। देयर इज नथिंग random policemen will just come and लाठी चार्ज you just for the sake, just like मतलब they'll treat you like inhuman,
in an inhuman way, and which is still true today. और उसके अलावा then on top of that then he talks of how like co-opting of jingoistic narratives by capitalistic this हाँ, thing right yeah. forces during the tournament. और उसमें एक पर्टिकुलर जो अभी द वन यू आर मेंशनिंग राइट, जब पाकिस्तान हाई हाई रैंडमली चलता है इंडिया श्रीलंका के मैच में, तो उसके लिए बहुत एक अच्छे से बोलता है कि It happens in multiple matches, by the way, not just India Sri हाँ, Lanka. तो उसके लिए वो एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत पोएट्री जैसा है वो. द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इज द स्पिरिट ऑफ विनिंग एज द एडवर्ड्स फॉर विमल क्लेम्ड. What is left of the spirit when your team is defeated? You By turn the on way, I think this is Vimal. This is not the pan masala. This is the shoe. Vimal This is, textile. the clothes. हाँ, textile. What is left of the spirit when your team is defeated? ये क्वेश्चन है. You turn on absent enemies. What does it say about the impoverished करके, मतलब then he finished also on this note, how he says कि कोक इंडिया में कर रहे कैंपेन कि विद द टीम, ऐसा कोक विद इंडियन टीम, और पाकिस्तान में सेम कैंपेन बट विद पाकिस्तान. हाँ, मतलब बेसिकली ये आज जो अक्षय कुमार करता है ना, देश की मिट्टी से बना हुआ सीमेंट एंड ऑल दैट, दिस प्रीडेट्स ऑल ऑफ दैट, और यही नॉनसेंस चल रहा था. मतलब द सीन वाज बीइंग सेट बैक देन. yeah. और सेम चीज, मतलब तभी भी उसने स्टार स्पोर्ट्स और ये सब के बारे में, टीवी एडवर्ट्स के बारे में ये बोला है कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन लाइक वॉर के ऊपर अराउंड सेट है, नैरेटिव्स आर ऑल अराउंड. जो वही मौका बीटा वर्जन बेसिकली. और ये he also says ना कि brands and products which have nothing to do with cricket is like किसी तो कोई random insurance या उसका ad भी कर दिया, मतलब जस्ट उसमें भी एक वर्ल्ड कप बना दिया, टुगेदर वी आर टुगेदर, और पता नहीं कुछ तो भी करके बस वर्ल्ड कप के साथ चिपका दो लोगो, कुछ भी करके बस लोगो चिपका दो. और इंश्योरेंस से मुझे याद आया ही, मतलब भाई कितनी इनसाइट है बंदे में, मतलब आई कांट इवन इमेजिन. He also says that so when it happens in India, like cricket was largely being sponsored by mass products, right? Which is like soft drinks and मतलब वही चखना वखना, वो सब जितने भी छोटे brands या whatever, like it was basically whatever was mass consumption के लिए. But in the UK, again for doing some UK, he just says कि मतलब ये दुनिया एक्चुअली अब यूके को सिखाएगी कि क्रिकेट इन लोगों के लिए है और ऐसे खेला जाएगा वगैरह वगैरह. एंड ही सेज जस्ट टू कंपेयर, insurance companies, like very expensive insurance companies, they sponsor cricket in UK, where So their audience is just like privileged things, जिनके पास कारें हैं सब. बेसिकली वो ये भी कह रहा है ना कि डेमोग्राफिक ये है कि इंडिया या साउथ एशिया में जो क्रिकेट सपोर्टर है वो यंग है, और यूके में है वो सब ओल्डर है, ओल्ड व्हाइट मैन बेसिकली. एक और चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि सबसे पहले तो वो जब पाकिस्तान का जो सबसे पहला मैच होता है, but England have turned it around now. You also see this in today's context. England have turned it around quite a lot. They had to, but मतलब they've been तो forced. वो लोग तो गए. I know, नहीं, but 2015 के बाद from the cricket side as well things started changing. But India में देखो नहीं होने वाला है. मैं कह रहा था कि आपका जब वो पाकिस्तान का पहला मैच होता है, वो वहां जाता है, गुजरांवाला में जाता है, गुजरांवाला पूरी पॉवर्टी डिस्क्राइब करता है ऑन हिज वे टू द स्टेडियम, और जिन्ना की फोटो बहुत इंटरेस्टिंग लाइक डिस्क्रिप्शन है. और उसके बाद ग्राउंड में हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर आके सुखाने की कोशिश करता है. तो इट्स एक अजीब से इडियोसिंक्रेटिक सा कुछ अलग सा है, बट लाइक आई थिंक अब तो क्रिकेट में वो सब भी नहीं देखने को मिलता है. वो उसको तो इनोसेंस बोलेगा या मतलब पता नहीं क्या बोलेगा तू, एग्जैक्टली. बट फिर भी एंड राइट थ्रू दिस इज लाइक Imran Khan, the character, he is missing because he's being specifically kept away from all of this because Benazir doesn't want him to be the forefront of any of this. So the pettiness reaches that level कि tournament के around जितना भी marketing है, and this is 96, right? Pakistan are defending champions, and 92 में it is like keeping Dhoni out of a 2015 World Cup. क्या धोनी का फैन नहीं है कि इमरान का फैन नहीं है भाई? तो इमरान को स्पेसिफिकली पर्ज किया जाता है सारे मार्केटिंग कैंपेन से, और टू बाईपास इमरान बुलाता है इमरान की भी पॉलिटिक्स. एग्जैक्टली, इमरान की भी पॉलिटिक्स है कि प्रिंसेस डायना को इनवाइट कर लो, आओ भाई, अब दूर करके दिखाओ. फिर और इन सब में भी एक मोमेंट है जब वर्ल्ड क्वार्टर फाइनल हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का बैंगलोर में, उसमें इमरान को इन लोग बुलाते हैं कमेंट्री करने के लिए बैंगलोर में,
And Imran is like a superstar in Bangalore, like super duper star. So, like like he says in the book that this guy who had no, like, who was kept out of everything, had no purchase in Pakistan, finally got to like play Yeah. that role in his enemy country. country. Imran at that point was basically Kejru in the lead up to say 2011-12 के आसपास का. I would Yeah. place him roughly around that. और वो and he acknowledges this fact also. हाँ, इमरान के personality का जो ये contradictions है, he is हाँ. Western educated, elite, but at the same time pandering to extremist conservative narratives. तो वो भी अभी बहुत क्या बोलता भाई, तब तो कुछ भी नहीं था, अभी तो इमरान खान हाँ. को वो और ज्यादा हो गया. बट ही कुड सी Yeah. दैट कमिंग ना, मतलब वो तभी उसने उसके पर्सनालिटी का वो जो ड्यूअल ये है, कॉन्ट्रडिक्शन है, ये तो यार, तभी उसने देख लिया था. अगर ये बंदा, अगर मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर बन गए होते और ये अहमदाबाद में कोई मैच देखने जाता तो अलग ही मजा आ Oh जाता. my God, that would have been. And his यार. understanding of this India Pakistan का मैच and then using that as a reference point to talk about minorities in both these countries, वो सबसे मतलब बुक का सबसे बेस्ट पार्ट इज दैट. वो एक अब्बास अली बेग के बारे में एक पर्टिकुलर ये बताता है. तुम लोगों को वो वाला सेगमेंट याद है? मतलब एक देयर इज दिस पार्ट वेयर ही सेज दैट आई माइट हैव इट समवेयर. रुक जाओ. हाँ, you look for it. तो मुझे एकदम से हाँ, चल go on. So the so ये it talks about like India Pakistan cricket होता नहीं है, and when contact resumed when Pakistan visited India, the previous year had witnessed triumph of the Oxford educated Indian Muslim Abbas Ali Beg, who had electrified Bombay with his half century against the Australians. It was customary to garland the batting champion, and in this case Beg was awarded with a kiss from a Hindu girl who ran onto the field. Yeah. The symbolic significance of this event is explored in the Moore's Last Sigh. Apparently वो जो Cadbury का जो ad था ना, वो was inspired by this Abbas Ali Beg वाला scene. And end में लिखता है, but against the Pakistanis, Beg failed. Suddenly, he was not an Indian hero, but a Muslim of dubious national identity. Yeah, now just replace Abbas Ali Beg with Mohammad Shami. It's still today it's true. I mean, इसी में जब अजहर आउट होता है तब भी ये होता है ना. हाँ, yeah. And so just two things. So one is like sticking with this current topic. एक तो he's the only book that I've read जिसमें I mean obviously अपने गुहा साहब ने लिखा है पुलवंकर बालू के बारे में. But he's an historian. Seeing calmly, but seeing calmly through that lens of his caste, mentioning Balu, and also like writing things like कि I think Kambli's last test innings was 100 or something, 150 or a double. हाँ, ठीक है. And then all of a sudden, so basically मतलब वही है ना कि there are two different standards. कि जरा सी गलती हुई कामली से and he's the villain and he's out. और ये जो same thing happens with Muslim. कास्ट और क्लास वाला जो ये है ना, ये वो मुस्लिम्स के केस में भी दिखाता है. तो he gives you this idea that नवाब ऑफ Mansur Ali Khan Patodi was the captain. Yeah. But he was never viewed as a Muslim because he was this aristocrat. But then he says like Azharuddin को ये वाला privilege नहीं मिला कभी. He has गुस्सा हो गया भाई अजहर की वजह से. अजहर को कुछ नहीं बोलना. he has to pass a different kind of a test करके. और ये जो कामली वाला जो है ना, मतलब ये हम लोगों में भी था, and we cannot deny this. We have consumed all of this nonsense around like Tendulkar was a success because वो एक अच्छे मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग से आता है. जो हर्षा भोगले ऐसी बातें बोलता है. हाँ. अच्छा मिडिल क्लास. और इसके ऊपर जो बॉम्बे वाला चैप्टर उसमें पूरा उसने एक कवर भी किया, राइट, हाउ द मुंबई क्रिकेट वाज टेकन ओवर बाय दीस अपर. मैंने इसका एक डिफरेंट वर्जन ये सुना है कि एंड द सेम थिंग आई हर्ड द सेम थिंग आई well not 100% parallel but the same thing I also heard between Yuvraj and Kaif, what I heard between Kamli and because Yuvraj and Kaif were probably I don't know, maybe a little वो तो एक अलग टॉपिक, वो तो एक पीसीसीआई के लिए मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, but my point was कि it was said कि Kamli, what I was told, what I was hearing was Kamli was probably more talented. No, he was more talented. मतलब he was more talented, but he didn't know how to channel his energy. How to channel his energy. Whereas Tendulkar, because he had a good family backing, support system. Yeah, exactly. He always had his head on his shoulders, and
then उसके And हिसाब similar से things I heard between Kaif and Yuvraj. Ki Kaif was probably more he because he was under 19 captain as well and blah blah blah. But then somewhere like I don't know. मतलब मतलब ये तो थोड़ा सा मैं आउटसाइड मैं सब एक रैंडम बात बोल रहा हूँ जिस बुक से रिलेटेड है. सब गांगुली इज अ कैप्टन, ग्रेट कैप्टन बोलते हैं. युवराज कैफ इज द बेस्ट एग्जांपल टू शो हाउ गांगुली वाज एक्चुअली नॉट that great identifier of people as people think. If Ganguly, what I can see today and what I was young enough maybe to see it even then, but not to have like to vocalize it, was that CAF, instead of like Yuvraj was more successful in one day cricket because his batting was suited to one day cricket and he had more utility when it comes to one day cricket. If they had used CAF, like I'm just saying, like Rahane is being used in Test Pujara or cricket, Rane, हाँ, so yeah, CAF would have had a very successful Test career. yeah. पर वही है ना. But ये कामली के केस में मतलब have you read of any other book or like any other Indian cricket writer who has seen Kamli through this lens? Like this is भाई वो तो बहुत दूर की बात कर रहा है. Even if you Google विनोद कामली की कास्ट और उसकी फैमिली के बारे में, it will never like you will have to dig a little to find out his Dalit identity. It will be mostly like he comes from a village where fishermen used to live, and you know he's from the fishermen community who basically have these fish. मतलब इस type की मतलब nobody has even said directly कि भाई ये है तो मतलब it's like there is पता नहीं Varun क्यों वो Grover's भी उसको article from a couple of years back, which हाँ was हाँ again it was Varun Grover. very That's why recent. he wrote about It it. was very recent, but again, like to be able to see all of this that happens simmers underneath, even Yeah. when it comes to talking about a tournament like the World Cup, that takes something. And if you then go back to 2011 and you see a vanilla cricket writer like Harsha Bhogle or anyone writing about it, you don't find any of this, right? Bhogle is a storyteller, right? Essentially a storyteller. He is not Storyteller for a very specific audience. right? Not like a cricket analyst. But हाँ. then for a storyteller, then he misses points like these, which is what Oh, makes yeah. sport what it is. Like a Sharda Ugra might be able to do that, but not many people can do that. We can't hear you. तेरी आवाज नहीं आ रही. म्यूट पे था मैं. भोगले में है ही नहीं वो कैपेबिलिटी. एक्चुअली मैं देखा था कामले का, जब कामले प्लेज इट लास्ट टेस्ट, एक्चुअली he got out for 28, but again it wasn't like श्रीलंका में था क्या? नहीं इंडिया न्यूजीलैंड 95. Okay. Oh. ठीक है, but his batting average at that point was still 54 after 17 tests. But it's an interesting phenomena because you know caste is so subtle, or even religion is so subtle. मुझे सुन रहा है, मैं सुन पा रहा हूँ. Okay, sorry. Continue. And now I can hear you. Basically it is so subtle that if you are not looking for it, you will never be able to say कि हाँ भाई क्या हुआ था, कामली को क्यों chances नहीं मिले. और मतलब वही है कि कामली, अच्छा मुझे जैसे सुरेश रैना और कामली में क्या डिफरेंस है. कामली वाज मच बेटर बैट्समैन, पर फिर भी देखो सुरेश रैना को कितना चांस मिला. और वो उसमें एक जस्टिफिकेशन भी देता है ना, वो एक्सप्लेनेशन भी देता है कि कामली वाज ऑलवेज व्यूड एज एन आउटलायर इन मुंबई क्रिकेट. फ्लैम्बॉयंस अलग था, मतलब यूज्ड टू ड्रेस अप डिफरेंटली एंड ऑल ऑफ दैट. सो इट यूज्ड टू बी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कल्चर टू व्हाट द अपर कास्ट महाराष्ट्रियन. अगर कामली खुद को वो करने लगता ना, जैसे सिग्नल करते हैं ना कि वो अगर वो सचिन जैसा हो जाता, कम बोलता और ये सब करता, तो भी शायद उसको वो चांसेस ज्यादा मिलते, क्योंकि सिग्नलिंग भी एक चीज है ना. हाँ. तो अल्टीमेटली जैसे जाहिर खान बाद में आता है, और जाहिर खान लिटरली, आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर, बट जब पाकिस्तान जाते हैं अपन फ्रेंडशिप सीरीज में 2004 में, तो जाहिर खान का इंटरव्यू लेते हैं वहाँ पे पाकिस्तान न्यूज़ चैनल, और वो शिवसेना की तारीफ कर रहा है वहाँ पे. हाँ. तो Zahir Khan के आइडेंटिटी में तुझे, if his name was not that, would you ever know that Zahir Khan is the kind of Muslim that basically the Shiv Sena back then or the BJP today wants, right? Or would be like willing to embrace. He's the Suryavansham का वो Suryavansham ने वंशी का good Muslim basically. good Muslim. और तुम लोगों को ये याद है, इसमें गुड मुस्लिम से याद है
Raj Singh Dungarpur jab, so Azhar is this big name in the domestic cricket circuit, right? And the reason they don't debut him in Pakistan, and Dungarpur तभी openly ये बोलता है कि it would be too there would be too much pressure on him to debut in a country where the culture is so much Ah, like his, like yeah. which is That so is just weird. yeah. I mean, I don't know. Actually, हो सकता है आज के टाइम पे ये कोई बोले भी ना because people are at least aware, you know. But उस समय literally बोल भी दिया गया ये बोले चीज। कि वो वहाँ उसकी तरह लोग हैं तो उसको ज्यादा हाँ। प्रेशर फील होगा. मतलब उस समय लोग कुछ भी बोलते लाइक इफ ऑन स्लाइटली सिमिलर टर्म्स, जैसे उसमें जब द आफ्टरमैथ ऑफ पाकिस्तान लूजिंग टू द आफ्टरमैथ ऑफ पाकिस्तान लूजिंग टू इंडिया इन बैंगलोर, कि फिर पाकिस्तान में सब शुरू हो गया कि मतलब हट चला फिक्सिंग हुई है, ये हुआ है, निकालो सालों को, ये करो वो करो और पता नहीं क्या क्या। तो उसमें ही इज बेसिकली डिस्क्राइबिंग कि जैसे अभी इंडिया में हो जाता है ना कि मैच का मुजरिम कोई भी टीवी पे आके कुछ भी बोल के चला गया, नहीं क्रिकेट से कुछ लेना देना ही नहीं है। So there's this, so some Pakistani channel पे like some मौलवी साहब is invited, you know, just like अंजना ओम कश्यप और रिपब्लिक टीवी पे कोई अभी आ जाएगा and he says, तो ऑब्वियसली मौलवी साहब का एक ही एजेंडा है कि लड़की प्राइम मिनिस्टर कैसे है, भुट्टो बेनजीर भुट्टो पीएम कैसे बन गई। तो वो बोलते हैं कि एनी कंट्री की औरत अगर लीड करेगी देश को तो यही हालत होगी। एंड देन ही सेज श्रीलंका who literally won this World Cup also had a female PM at that time, and in 1983 Indira Gandhi was the PM and India won the World Cup. तो बोला कि ऑन द कॉन्ट्ररी वर्ल्ड कप जीतना है तो और बना दो लड़कियों को तुम। हाँ. अरे एक चीज अपन भूल ना जाए, हाँ। वो ये है कि कैसे कीनिया वेस्ट इंडीज वाले गेम में Oh, that was such it. That whole thing at a very higher level, it was one of the luckiest occurrences of for us readers as well. That you know, Mike Marquesee wanted to go to Karachi and watch which game was it? South Africa, Yes. Pakistan. South Africa, Pakistan. He wanted to watch, but for some whatever his itinerary was designed as, he was stuck in Pune, and he got to watch West Indies versus Kenya. And thank God for that, despite being an atheist. वो ठीक है, आई मीन वो सब ठीक है। मैं उस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ जब लारा को भूत भूत बोलते हैं। Oh, नहीं वो तो नहीं तो हाँ ओके, आई थॉट कि शुरू से नहीं, हाँ, मैच, बट हाँ तो बेसिकली लाइक हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेचर समझ में आता है अपने। नहीं, वो बोलता है कि हाँ, लारा is this very like revered figure in India, like he has a big fan base and these people adore Lara, the crowd that he is referring to. And then बीच बीच में लारा जब आउट हो जाता है या आउटफील्ड में जब दिखता है तो उसको भूत भूत चिल्लाते हैं, and then he says भूत is used for yeah, dark skinned people dark skinned and people and depressed those of castes. depressed castes in India. Correct. and again it is still true, which literally happened an year and a half ago in India. So matlab okay, Sammy not as big as Lara, but I would say almost the same given the IPL and T20 success that he's had. So but no, for in that match it is so amazing that I mean मैं तो एक historical documentation के purpose से भी बहुत खुश हूँ कि he got to see that match, because imagine a Kenyan team which who were at that time they were Amateurs. all part-time cricketers. They had to take leaves from their works and come to, you know, there was obviously nothing, I mean everything wasn't right in the West Indies dressing room at that time, but still I mean a team which has Lara, Bishop, Ambrose and whatnot, they would have rolled over Kenya easily, or they should have. And Kenya ने क्या 166 all out हो गई थी, I mean it was like 166 for 9 or something they struggled to get. 50 ओवर, हाँ वो टक्कर चलता था ऐसा। हाँ. So but yeah, but and when they win and when they're actually winning, so obviously the first innings nothing really happens, the ground is also pretty much empty, but when they start winning, about 300 Kenyan students studying in Pune, they come to the ground, and then after winning the Kenyan team is celebrating a World Cup victory over West Indies with fellow citizens in Pune of all places. Punekars. तो दिस इज ऑल्सो लाइक आई मीन ये उन लोगों के लिए भी एक समझने की बात है जो बोलते रहते हैं ना कि एसोसिएट्स को मतलब the standard will go down और blah But blah तू blah blah blah. तू सुन रहा है, मतलब तू सोच रहा है ये जो टेक देता है ना,
ये जो टेक लोग देते हैं ना कि ये एसोसिएट्स हैं, इनको क्यों होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो वेरी अपर कास्ट प्रिविलेज टेक का या इक्विवेलेंट हाँ बेसिकली, एग्जैक्टली या विदाउट एग्जैक्टली एम्पैथी वाला जो टेक है हाँ कि मेरिट नहीं है ना। कोटा कोटा बंद दो, कोटा। एग्जैक्टली हाँ सेम। वही 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 और तुझे याद है टूर्नामेंट के स्टार्ट में जब वो इसके बारे में बोलता है, ओपनिंग सेरेमनी के पहले डिस्क्राइब करता है, वेर ही टॉक्स टू अ कपल ऑफ एसोसिएट administrators and they say that हमको तो खराब होटल दिया है. He says that there is this caste system या या among teams where all the test playing nations have been given the ITC या कोई बड़ा 2-3 होटल्स इन कैलकाटा, और फिर कीनिया और इन लोगों को सब कोई फालतू सा होटल दे दिया, और वो कीनिया वाला जो उनका मैनेजर होता है वो कंप्लेन भी करता है कि अपन को तो खराब दिए लाए भाई. Yeah. And again, the layered thing, despite documenting this underdog victory of Kenya over the West Indies, he still makes the point कि it's kind of ironic that this African team, I mean, basically trying to make a point कि एक गोरी टीम को हराया होता तो और भी सही होता. सही But होता. it's a little tragic कि वेस्ट इंडीज को हराया मतलब. अरे उससे मुझे एक पॉइंट याद आया कि इस मैच के बाद वो होता है कि इन लोग वेस्ट इंडीज टीम जाता है इन लोग के ड्रेसिंग रूम में और इनसे बात करता है. फाइनल लारा जाता है, लारा बहुत बात करता है. लारा कुछ एक चीज बोलता है, लारा बोलता है कि इट्स फाइन दैट वी लॉस्ट फ्रॉम केन्या, इट इट फील सैडर इफ वी लॉस्ट टू दोस लाइक Australia, बेसिकली वाइट टीम से हारते हैं. नहीं और उसमें साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका बोलता है वो. हाँ. Yeah, साउथ अफ्रीका का specifically नाम South लेते Africa. हैं और फिर क्वार्टर फाइनल में लोग साउथ अफ्रीका को हरा देते हैं हाँ. जो कि मतलब इट्स सच And that is Lara's amazing हाँ. 100 in that It's such a match. weird thing because see, West Indies was number 4th in Group A and South Africa was number 1 in Group B. They had won all their games. तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक स्पिरिट लाइक ये सब चीजें जो उस वक्त मैंने नहीं सोची थी कि there is this spirit that West Indies really wants to beat South Africa and then they go and beat South Africa. All this is मतलब yeah. Because there's always this element that South Africa is this bunch of white guys representing an African nation वाला जो element है, that continues to be there basically. Yeah. No, ये मुझे एक और चीज तभी बोलना था, then I'll just continue. One last thing about the India-Pakistan game, जो जिसमें वो this again seems like could have been something written in Wire this year वैसा टाइप का. तो वो मियादाद के बारे में ये बोलता है कि मियादाद के बारे में इंडियन फैंस ऑलवेज यूज्ड टू से दैट ब्रैश है, मतलब बस ब्रूट पावर है पाकिस्तान क्रिकेट में एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इवन द पाकिस्तानीज यूज्ड टू बिलीव दैट दिस इज व्हाई दे वन अगेंस्ट इंडिया post Sharjah. Then he goes on to say that this is well in line with the stereotypes promoted by advocates of Hindutva, which perceived Pakistanis as aggressive and unashamedly nationalistic, in contrast to the docile and apologetic Indians. Some even claimed that Pakistani religious identity gave them an advantage on the cricket field. To match the enemy, India would have to emulate them. It would have to rediscover itself as a Hindu nation. One of the major themes of Hindutva has been the need of Hindu aggression to compensate for centuries of insult and injury at the hands of Muslims. So, the BJP and Shiv Sena found it easy to play upon India's discomfiture over Pakistan's cricketing ideologies, legacy करके. अब बताइए कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं शिवसेना. वो तो है. कैसे क्या हो गया देख. यही चीज आज भी चल रहा है ना बेसिकली, मतलब हाँ या इट्स द सेम थिंग. which is why Pakistanis also sell the same thing कि जो वकार यूनिस और ये लोग बोलते हैं कि वो तो हम तो बीफ खाते हैं इसलिए हम फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं, वो वाला सेम ही है. मतलब यू दे वांट टू ओन अप टू दैट आइडेंटिटी एंड दैट आइडेंटिटी कन्वीनियंटली बेनिफिट्स दीस पीपल. And on that note, let's also talk about the eventual winner of this tournament, Sri Lanka, and how he notices after Sri Lanka winning the World Cup, going back, like he visits Sri Lanka, and that beyond that initial jubilation and celebration, everything is back to normal. There's no fanaticism around cricket. It's very like it's basically had India or Pakistan won it, it would have been a totally different kind of experience. That is what he kind of feels. But then वहाँ पे भी वो लेकिन एंड में ये तो बताता है ना कि when they do a trophy tour
They have to then go visit all of these हाँ Buddhist monks who were actually calling for yeah genocide yeah. So that's month what or I'm two saying ना, वो उसने तीनों कंट्रीज में जाके हर जगह की मेजोरिटी की जो पोल खोली है ना, that is my main takeaway from. He also talks about how Murli being the only quote Tamil, unquote yeah. Tamil, and also not Not the not the Tamil, like, yeah, not the yeah. Tamil, but yeah. So even within the Tamils in Sri Lanka, there is distinction because there are Tamils who have always lived in the island, so they are seen as which is more what native they Tamils. claim, which is again Then Yeah. there are Tamils who've moved from India, so like more as recent plantation immigrants, workers, plantation basically. workers, and Muralidharan is the son of one of such Tamil family, and that is why a lot of Tamils look at Muralidharan with a sense of like. Basically, जैसे Representation. जैसे जैसे अदनान सामी को देखता है ऐसे Adnan Sami. that is So also no, very but interesting. yeah, I mean, even in Sri Lanka, they had to, like, imagine, मतलब जो Buddhist monks calling for genocide is just, it's just sounds funny, but it was true. So और ये सब में मतलब there is this such a nuanced take on whether इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट शुड हैपन और नॉट. मतलब ये कॉन्स्टेंटली आज तक ये डिबेट चल रहा है ना कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए. एंड दिस इज समथिंग वी स्पोक अबाउट लास्ट मंथ ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप मैच, राइट? कि it becomes nauseating to even, because if there हाँ is no मतलब bilateral cricket and then this is yeah. happening only in the World Cups, it is essentially what it is being sold as, a war minus the shooting वाला narrative. Yeah. और उसके बारे में भी वो मतलब वो अच्छे से समझाता है कि because even back then bilateral cricket wasn't happening between India and Pakistan. It was only happening in Sharjah to an extent and in World Cups. तो बोलता है कि शारजा में the bitterness of the rivalry is also partly to be attributed to the fact that they don't play each other that often. तो शारजा में because they don't play each other in each other's countries, and शारजा में everything becomes this amplified ultra jingoistic kind of this thing. तो वो आज भी सही है, तब भी मतलब that is what it was essentially. And on that note, I think we can Just a special mention to Arvinder De Silva's batting in the semi-final. So, but the way he's and in the described final, it, no, yeah, in the final, yeah, I mean, he scored a century in the final, but especially in the semi-final, no, he was out by the 14th over. But the mayhem that, मतलब अभी भी मैं कहाँ उठता हूँ वो सोच के, because I don't remember cricket before मतलब I try to remember it, but I think 96 World Cup is my most, maybe मैं एक आध highlights देख के उसके पहले का कुछ मेरे को चमकेगा, but even without doing that, ये World Cup से अच्छा खासा स्टार्ट हो जाता है मेरा मतलब फ्लैशबैक्स. तो उसमें मुझे भाई वो दो कॉलर खड़ी करके बटन खोल के और जो पेला है आदमी ने, और हल्का सा व्हाइट वाला टी शर्ट जो अंदर पहना है वो दिख रहा है बाहर, बनियान yeah. बड़ा बनियान पहना है. और वो जो लाइक yeah. मार्केसी भी बोलता है कहीं पे कि रणतुंगा और डिसिल्वा को बैटिंग करते देख के लगता है कि मतलब थोड़े टबी लोग भी कुछ कर सकते हैं. टेलर वेलर ये सब भी yeah. मैं एक लास्ट में ये वाले एक इसके साथ खत्म करना चाहूंगा, ठीक है? ये अपने घर में घुस के मारा नैरेटिव वालों के लिए है, जिनको खुशी मिलती है वो सब करके. ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स नॉट अ ग्लोबल कल्चर ऑफ स्पोर्ट but a televised substitute for it, in which national identities are commercial playthings. For all the pains and perils of playing on home soil in front of unruly and partisan spectators, the only hope of reclaiming cricket in the subcontinent from bigots and demagogues lies with the crowds themselves. Only in the democratic domain, where cricket and its meanings are shared and shaped by multitudes, can there arise a force strong enough to override the manipulations of the elite. A nation is a collective enterprise. Outside of that is a gambling hall for opportunism and adventurism of power. इसके साथ हम मोदी जी को लाने वाले हैं. बस मार्केसी बस वो इंडिया इंग्लैंड वाला मैच मोदी वाला कवर कर देता. अरे यार सीरियसली मैन, इट्स और जय शाह के और गांगुली के बारे में क्या बोलना होता है उसका, मतलब सो मच इट वुड बीन हो सकता था. बट शारदा उगरा है हमारे पास. तो चलो RIP Mike Marquesee. Let's see what Sharda Ugra right. And with that, it's a wrap. That's 4 in a row. There is good. They're going to blow next. The prodigal son turned Messiah gets his second 100 in successive. India have won in dramatic style. The whole